Hello students, again we are going to discuss about the metals and non-metals chapter. So in the last class or in the last video, we left in the topic of the reaction of the metals with the non-metals. There we discussed about the many things like the cations, anions, about the metal properties and about the non-metal properties. Then revise one more time, what is the need of reaction of the metals and the non-metals? Actually, all the elements, right? Why they are going to react means the reactivity of the elements. It is the tendency. It is the tendency. Tendency means the capacity. What do you mean by the tendency? Tendency is nothing but it is a capacity. So the reactivity of all the elements is the tendency to attain their completely filled valence shell. Valence shell means, what do you mean by valence shell? Valence shell nothing but it is the outermost shell of an atom. The outermost shell of an atom is called as the valence shell, right? You just consider an example of lithium, right? Atomic number of lithium is 3. It means 2, 1. So if you are going to represent the lithium in this manner, means it is a lithium, right? The capacity of the first shell is 2. And how many electrons remain here? 1. Hence, this shell is going to call as the valence shell. Right. The outermost shell. It is the innermost shell and it is the outermost shell. Which is the outermost shell of an atom is there, that is going to call as the valence shell. And always atoms or the elements, they try to complete their outermost shell. Right. They try to fill their valence shells. That is the reason all the elements, they have the tendency to fill their valence shell whenever the atoms of metals, right? The atoms of metals, they are going to lose electron, right? And they are going to form the cations, and the non-metals, they are going to gain the electrons, right? And they will form the anions. Means metals are always positive and the non-metals are always negative. So that is about the reactivity of the metals and the non-metals, right? So in this one, we are going to discuss about the example of the formation of NaCl. As I said in the last video, that I am going to discuss one of the very important topic that may arise for the 3 marks in the annual examination. That is only the formation of NaCl. Write down today only. It will arise for 2 to 3 marks compulsory. The formation of NaCl, right? So NaCl is nothing but it is sodium chloride. Sodium chloride. We know that the first will be the metal and the second will be the non-metal in a compound. You already studied in the 9th standard the rules of writing the compounds. Always the first should be written the metals and the next should be written the non-metals, right? Means here the sodium is the metal. We will take one by one. We will take now sodium, right? Then the question is, what is the atomic number of sodium? The atomic number of sodium is, check in a periodic table, it is 11. The atomic number of sodium is 11. If you are going to write the 11 in electronic configuration, what it be? It will be 2, 8, 1. Sir, how it is possible? The capacity of the first shell is 2. The capacity of the second shell is 8. The capacity of the third shell is 18, 32, 54. Like this manner it will go. You can apply the formula, that is 2n square, to find out the capacity of electrons in each shell, right? You can name the valences, the shells, as 1, 2, 3. N is equal to 1, N is equal to 2, N is equal to 3, N is equal to 4, so on. So in this formula, you put the N1 value, N2 value, N3 value, N4 value, and then you will know that what is the capacity of the electrons in the A shell. So right. So it is the electronic configuration of sodium 2, 8, 1.
So here you check that to become stable, right? Here the sodium is unstable because there is one extra electron is there in a sodium at the outermost shell. I will represent the sodium in the diagram form. You just observe it. That is not necessary to write in an annual examination. Just understand. First shell, second shell, third shell. Right. It is a sodium. Right. It is a sodium. The capacity of first shell is 2. The first shell is completely filled. The capacity of the second shell is 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And it is one more. 2. First shell, there are 2 electrons are there. Second shell, there are 8 electrons are there. And in third shell, there is 1 electron is there. And the third shell is only known as valence shell. Why? Because the third shell is here, outermost shell. Which shell will be the outermost? That is we are going to call as the valence shell. So in the valence of sodium, there is one extra electron. And that extra electron is making the sodium as unstable. So here the sodium is unstable. Because of this extra one electron present in the outermost shell of a sodium, the sodium is unstable. What the all elements try to do? All elements try to become stable. It is a tendency of an all elements to reach to their stability. Then who is avoiding and who is stopping to become stable to the sodium? That is one extra electron is there in the outermost shell, right? So if that one extra electron will go from the sodium means now the first shell capacity is 2, second shell capacity is 8. That is the completely filled electrons, means the sodium becomes stable. Means this extra electron should be loose. That is the reason metals lose electron. As we discussed, metals lose electron. We can show here Na plus E minus. Metal, sodium is losing electron. You have to represent it by Na plus E minus. It means that sodium is lose 1 electron. 2 electron means you write here 2 E minus. 3 electron means 3 E minus. How many electrons will be there? You have to represent that much number. Here the sodium is losing 1 electron. Just write it as Na plus E minus. So as the sodium is losing one is electron from the valence shell, after losing what will be? The sodium atomic electronic concentration will be 2,8. It will be 2,8 because it's lose 1 electron. As a result, this is going to call as sodium cation. What is the name of this one? Sodium cation. Cation means positive. Sodium gains positive charge by the losing of 1 extra electron. Now you check here, sodium becomes stable. First shell capacity is 2, second shell capacity is 8. Now it's a stable, right? Then to whom it is giving the electron? किसको ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है? एक किसको दे रहा? वो भी क्या रहना कहते हैं, वो नॉन मेटल रहना. फर्स्ट कंडीशन तो नॉन मेटल रहना है. इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वो तो नॉन मेटल रहना, क्योंकि मेटल मेटल रिएक्ट नहीं करते, राइट? वो तो नॉन मेटल रहना, वो तो वी नो दैट वन. तो अब सोडियम ऐसा एक नॉन मेटल को ढूंढना देने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जिसका वैलेंसी भी एक ही है. Whose valence is also 1 only. Then whose valence is 1? You check here, chlorine. Chlorine is a non-metal whose atomic number is 17. Right? Means 2,8, 7. The electron configuration of chlorine will be 2,8, 7. Means 1 electron is needed to complete its outermost shell. Right? Sir, you said the third shell capacity is 18, but आप तो बोल रहे अब 8 भी complete shell होता. First shell capacity is 2, second shell capacity is 8. In third, fourth, fifth shells, there is a rule is that
एटलीस्ट द atom should attain their octet structure. इसको क्या बोलते हैं मालूम है हम? ऑक्टेट स्टेट बोलते हैं हम. एटलीस्ट 18 तो नहीं, थर्ड शेल का कैपेसिटी कितना है? 18 है ना. 18 तो नहीं, एटलीस्ट 8 तो होना बोल के ऑक्टेट स्टेट रूल बोलता हमको. मतलब इसको 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थर्ड शेल में? अभी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है. हाँ, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. मेरे पास 1 रुपए ज्यादा है, आपके पास 1 रुपए कम है. समझो मेरे पास 11 रुपए है, आपके पास 9 रुपए है. मेरा 1 रुपए आपको दिया, आपका भी 10, मेरा भी 10. इट्स नॉट लाइक दैट हियर. हियर 17 and 11 मैटर इज देयर. मीन्स सिंपल थिंग इज दैट मैं आपको देने के बाद मैं भी खुश, तुम भी खुश, और दोनों मिलके क्या हो गए? स्टेबल बन गए. देन टेक द क्लोरीन. क्लोरीन atomic number is 2,8,7. Electronic configuration of chlorine is 2,8,7 as it has atomic number is 17. मतलब क्लोरीन के पास क्या कम है? क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है. वो 1 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा? अब सोडियम इसको दे रहा, राइट. इट बिकम्स E-. वो सोडियम इसको दे रहा, देन प्लस E-. जब वो इलेक्ट्रॉन ये लेता, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तब क्लोरीन क्या होता मालूम है? इट बिकम Cl. 1 इलेक्ट्रॉन लिया ना, 2,8,8, राइट. नाउ दिस इज कॉल्ड एज क्लोरीन anion. Now this chlorine also becomes stable, sodium also becomes stable. Sodium lose 1 electron and chlorine gain 1 electron. When you lose electron, it becomes cation. When you gain electrons, it becomes anion. As a result, in a final manner, you have to represent in this form. Sodium, right, plus chlorine. The sodium has 1 electron, extra electron in the outermost shell, and the chlorine has 7 electrons in the outermost shell. Means 1 is needed here. That 1 electron will be transferred to this side. So now it becomes sodium carries the positive charge, whereas chlorine carries that 1 electron will come this side, right. ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो क्लोरीन कैरीज नेगेटिव चार्ज. सो दिस इज योर formation of NaCl. This question will arise for 3 marks in annual examination. Keep in mind, if you not understood means you can see one more time what is happening here. Sodium about the chlorine. अगर लूज कर रहा है तो आप किधर रिप्रेजेंट करना? E- को प्रोडक्ट साइड में एरो मार्क के बाद रिप्रेजेंट करना. गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ? रिएक्टेंट साइड में एरो के पीछे रिप्रेजेंट करना. एरो के पीछे आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे तो वो गेन कर रहा है, एरो के आगे डाल दे तो वो लूज कर रहा है. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, राइट. इधर क्या कर रहा है? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इधर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है. ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, दोनों मिलके स्टेबल हो गए. तो व्हाट द एलिमेंट्स डू? एलिमेंट्स वांट टू बिकम स्टेबल. सो नाउ द सोडियम क्लोराइड इज स्टेबल. एज अ रिजल्ट it will form sodium chloride, right. So this is the reaction of metals with the non-metals, where sodium is a metal and chlorine is the non-metal. Both will react together to become stable, right. This is called as stability. So now about the ionic compounds, right. This may arise for 2 marks in examination. What question will ask? He may ask for even 1 marks also. What are ionic compounds? Or even he may ask, write the properties of ionic compounds. There are the 4 properties are there of the ionic compounds. That is very important for the 2 mark purpose, right. Then what do you mean by ionic compounds? What do you mean by ionic compounds? Ion means charges. What do you mean by ions?
Ions are nothing but charges. Then how many charges are there? There are the two charges are there, which is cation and anion. Cation is positive, anion is negative. Means ionic compounds nothing but they have the metals are positive and non-metals are negative. So means it's understood that ionic compounds, they are formed, right? They are formed by the transfer of electrons. Remember this, from a metal to a non-metal, right? From a metal to a non-metal means there is a condition that the ionic compound should transfer, or they will transfer the electrons from a metal to the non-metal. Then only they are going to form as the ionic compounds, or else the positive charge will not react with each other, the negative charge will not react with each other. Always there is a need of opposite signs for the reaction. A positive charge will react with the negative charge, where the positive is the metal and the negative is the non-metal. They will togetherly combine, and that formation, transfer of electron and gaining of electron, that formation is called as ionic compounds, right? So means the compounds formed by the transfer of electrons from a metal to a non-metal are called as ionic compounds. Or even to confuse you in the examination, he will ask electrovalent compounds also. What are electrovalent compounds or what are ionic compounds? Both meaning are same only. Now the properties of ionic compounds, as we discussed in a formation of NaCl. The formation of NaCl is nothing but that is also the ionic compounds. You can check that in the formation of NaCl there is a transfer of electron from metal to the non-metal. Even the NaCl is which compound? NaCl also comes under the ionic compounds. NaCl nothing but our household common salt, right? Which salt we are going to use for the taste purpose of all the food items. So that salt is only the NaCl, right? Means our NaCl is which compound? Our NaCl is ionic compound. Then what are the properties of these ionic compounds, right? The first property is physical nature. दिखने में कैसा है ionic compounds? That is the first property. Physical nature means दिखने में कैसे है वो? They are solid, hard and generally brittle. Solid है, right? State क्या है उसका? Solid है. आपके घर का नमक कैसा है? Solid है, liquid है, गैस है? Solid है सर, right? Hard है क्या soft है? टच करके देखो, वो मोटा मोटा आते देखो, मोटे मोटे साल्ट को टच करके देखो, हार्ड है क्या सॉफ्ट है? सर हार्ड है. इजिली टूटता नहीं टूटता? सर बहुत इजिली टूटता हो. मीन्स दे आर ब्रिटल, जनरली ब्रिटल. मतलब सॉलिड है, हार्ड है, लेकिन तोड़े तो टूट जाता. दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रिटल. दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, द फिजिकल नेचर. लुक, in look wise how it is, right? It is a hard, it is a solid, but generally it is a brittle in nature, right? And the second property is melting point and boiling point. कभी तो घर का नमक लेके एक पैन में डाल के उसको हीट करके देखो, सॉलिड से लिक्विड होने को कितना टेम्परेचर लगता है उसको. दैट्स कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट मतलब लिक्विड टू गैस होने को कितना टाइम लगता है. एक एक्सपेरिमेंट करके देखो. Your kitchen will be surrounded with that smell only. So don't do it in the home. You can do it in the outside. That is dangerous. Don't do it. Just observe here. They have high melting point and boiling point. जो आयनिक कंपाउंड्स रहते हैं देखो, इनको हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है और इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है. सिंपल. व्हाई दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? बिकॉज बोथ आर स्टेबल. सोडियम है, क्लोरीन है, बोथ क्या बन गए? स्टेबल बन गए, राइट? आयनिक बॉन्ड से स्टेबल हो गए. अब इस बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं रहता. सिंपल थिंग. ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ ना मेटल और नॉन मेटल के साथ, जो आयनिक बॉन्ड हुआ ना, ये बॉन्ड तोड़ने को आसान नहीं है. इसको तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए. जब ये टूटता लिक्विड बनता और टूटता तो गैस बन जाता. तो ये तोड़ने को जो ताकत चाहिए ना वो ज्यादा लगता है. इसी के लिए they have the high melting point and the boiling point. Simple thing.
he may ask in competitive exams like this question also, why the ionic compounds have the high melting point and boiling point. Simple question he will ask. You can write in a general form, right? The ionic compounds, they are formed by the transfer of electrons, right? They have the ionic bonds, and it is not easy to break the ionic compounds. That's the reason they require the high melting and they have the high melting and boiling point, right? It is not easy to break the ionic bonds that much easily, which is formed by the transfer of electron. Sharing of electrons is called as covalent bond. Transfer of electron is called as ionic bond, and ionic bonds are a strong bond than the covalent bonds. Let it be, don't go that much deep. The third property is solubility. What do you mean by solubility? मतलब soluble है या नहीं है? That is the solubility. Don't misunderstand here. MP, BP. MP means melting point. BP means boiling point. Right? Soluble है क्या नहीं? आपका घर का जो नमक है ना, वो soluble है या insoluble है? Right? Simple. Generally soluble in water. सर वो तो पानी में आसानी से soluble हो जाता, मिल जाता हो. But हम कभी भी नहीं देखे सर पेट्रोल और केरोसिन में डाल के देखो. आज हम ट्राई नहीं किए सर, बट ट्राई करके देखो, थोड़ा केरोसिन पेट्रोल में डाल के देखो. राइट? ज्यादा मत लो फिर, दैट इज वेरी डेंजरस. ओके, कुछ भी करना है ना साइंटिफिकल एक्सपेरिमेंट, प्रिकॉशंस के बिना कुछ भी नहीं करना. विदाउट प्रिकॉशंस किए ना, दैट कैन कॉज यू द सीरियस प्रॉब्लम. आपको स्किन इफेक्ट हो सकता, आपका आंख जा सकता, क्योंकि वो उड़ के, अगर आप साल्ट को पैन में डायरेक्टली हिट कर रहे, वो क्या करता, उछल के आंख में आके गिर सकता. राइट? विदाउट प्रिकॉशन जो भी एक्सपेरिमेंट हम लैब में करते, दैट इज डिफरेंट, एंड घर में करने का अलग रहता. प्रिकॉशंस के बिना कुछ भी नहीं करना. राइट? केरोसिन में थोड़ा, केरोसिन में डाल के देखो नमक को, सॉल्युबल है या अनसॉल्युबल है, डाल के देखो. बट वी आर टेलिंग हियर दैट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल. पेट्रोल और केरोसिन में आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं है. किसमें सॉल्युबल है कहते हैं? ओनली इन द वाटर. राइट? दैट इज द third property, solubility. Then the fourth property is conduction of electricity. I suggest you to conduct this experiment because it is not dangerous. Okay, you conduct this experiment. Take simple, do the simple thing. Take a glass. I will tell you how to do this experiment. Take a glass. Which glass will you take? Take a transparent glass. Right? And in the transparent glass, you just fill the water. You just fill the water. Then take 2 iron nails. Take 2 iron nails and take a battery. Take a battery. It is a symbol of battery. The bigger line shows it is the positive end and the small line shows it is the negative end. Battery ले लो एक. उस बैटरी के जो 2 एंड रहते, देखो 2 एंड को क्या करो, तार वायरिंग बांध दो. जो एंड जो रहता वो वायरिंग हो सकता. राइट? अगर आप बड़े एंड को डाल रहे तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव साइड हो गया. छोटे एंड को डाल तो नेगेटिव साइड हो गया. अब इसको क्या करो, अब देखो इसके बाद में इधर एक कहां तो एक क्या करो, बल्ब को और एलईडी को एडजस्ट करो उसी लाइन में. राइट? इसी एरिया में कहां तो एक वायर को सेंटर में एलईडी से ज्वाइंट कर दो. अब देखो ये तो ओपन सर्क्यूट है. ओपन सर्क्यूट से तो एलईडी ग्लो नहीं होगा, तो थोड़ा ये दोनों को नेल्स को ऐसे टच करो, एलईडी ग्लो होने लगता है. राइट? बाहर से करो टच, एलईडी ग्लो होने लगता है. तब क्या पता चलता है आपको, बैटरी में चार्ज है. सिंपल. अब ओपन सर्क्यूट रहे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होता, बट हम कंडक्शन कर सकते हैं बाय द कंडक्टिविटी. उसी को हम कंडक्टिविटी बोलते हैं. राइट? अब ये पानी है, प्योर पानी में दोनों भी टच मत करो ऐसा. राइट? अब ये दोनों भी आयरन नेल है. एक साइड को हम पॉजिटिव वायर से कनेक्ट किए तो ये पॉजिटिव हो गया, ये कैथोड हो गया, और ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया. राइट? अब दोनों को टच किए तो ग्लो हो रहा. कि टच मत करो, ओपन ही रखो, ऐसा ओपन ही ग्लास में डाल दो. राइट? अब ओपन सर्किट हो तो एलईडी तो ग्लो नहीं करेगा. राइट? अब इस ग्लास में डालो दोनों भी नेल्स को डिप कर दो. ओपनली डिप करो, उसको क्लोज मत करो. पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड. इधर बीच में एक बल्ब को नहीं तो एक एलईडी को करो टच.
राइट, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब प्योर वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन नहीं करता, बिकॉज प्योर वाटर में कुछ भी मिनरल ही नहीं रहते। अब क्या करो, ऊपर से इसको डिप करने के बाद ऊपर से क्या डालते जाओ, ऊपर से साल्ट को डालते जाओ, ऊपर से साल्ट को डालते जाओ, थोड़ा 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 डालते जाओ। जैसे ही आप साल्ट को डालते और थोड़ा स्टिर करते रहते, यू चेक दैट बल्ब स्टार्ट्स टू ग्लो हियर, राइट। थोड़ा डाले तो थोड़ा लाइटली जो ग्लो करता बल्ब, बाद में और डालते जाओ और डालते जाओ और डालते जाओ, बल्ब ब्राइट होना स्टार्ट होता, राइट, ब्राइट ब्राइट होना स्टार्ट होता। इसका मतलब है कि कभी भी NaCl को आप वाटर में लिए, एक्वियस सोल्यूशन में ले लिए, NaCl को आप पानी में लिए, एक्वियस सोल्यूशन में लिए, तो क्या होता मालूम है, ये डिसोसिएट्स होता करते। व्हाट इट हैपेंस, इट डिसोसिएट्स इनटू टू आयॉन्स, Na+ Cl-। अब साल्ट को हम पानी में डाल रहे तो डिसोसिएशन होना स्टार्ट हो गया, Na+ A-। जो प्लस वाला है Na, अब समझो इधर हम साल्ट डाले Na+ Cl-, Na+ Cl-, Na+ Cl-, ऐसा बहुत सारे आ गए अब आयॉन्स, राइट। अब प्लस वाले क्या करते मालूम है, नेगेटिव साइड को जाते, Na जाता, नेगेटिव साइड इस साइड को Na जाता, और इस साइड को Cl जाता, बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल विथ ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट विथ ईच अदर। सो जो क्लोरीन है वो क्लोरीन किस साइड में आता, इस वायरिंग पॉजिटिव के नेल के पास आ जाते डिपॉजिट होने को, और सोडियम में वो नेगेटिव के पास आ जाते। मतलब द मूवमेंट ऑफ चार्जेस इज ओनली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस और द फ्लो ऑफ आयॉन्स। तो इधर क्या हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स और सॉरी आयॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या हो रहे, फ्लो ही हो रहे ना। Na नेगेटिव के पास जा रहा है और Cl पॉजिटिव के पास जा रहा है, तो दोनों भी फ्लो हो रहे सॉल्यूशन में। तो द फ्लोइंग ऑफ द चार्जेस इज ओनली द इलेक्ट्रिसिटी। द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। यू कैन टेल सिंपल वे, फ्लो ऑफ चार्जेस is called as electric current. Here the charges are flowing. So that's the reason we are saying that the ionic compounds conduct electricity, right? Simple see here. They conduct electricity in molten state, not in solid state. Molten state, or even you can tell the liquid state or solution state. सिर्फ लिक्विड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स कंडक्शन करते, सॉलिड स्टेट में कंडक्शन नहीं करते। एक बड़ा सा ले लो, पत्थर जैसा साल्ट को ले लो, राइट। उस पत्थर जैसे साल्ट में दोनों भी क्या करो, नेल्स को डिप करो, इधर एक छेद बना के इधर एक छेद बना के, ग्लो होता नहीं होता, देखो नहीं होता ग्लो। सिर्फ उस साल्ट को आप पानी में मिला दिए तब भी कंडक्शन होता करते। ओनली कंडक्ट्स इन लिक्विड स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट. The solid state conduction is not possible in the ionic compound. So these are the 4 physical properties of ionic compound that are very important for your examination point of view, that may ask for the 2 marks. He will ask simple, what are ionic compounds? What are ionic compounds? The ionic compounds are formed by the transfer of electrons from a metal to the non-metal, are called as ionic compounds, or even they are known as the electrovalent compounds. So there are the 4 physical properties are there. First one is the physical nature. In the physical nature we studied the ionic compounds are hard, solid, brittle. Generally they are brittle. Second is melting point and boiling point. Ionic compounds have the high melting point and the boiling point, right? The third question is solubility. The ionic compounds are soluble in water, but they are insoluble in the solvents like the petrol and the kerosene. And the fourth, last one is the conduction of electricity. Ionic compounds conduct electricity in liquid state, that's called the molten state, but not in solid state. This even diagram is given in your textbook also. Many times that diagram arises in the examination for the 2 marks. The conduction of electricity, right? That even you can practice there. It's given in the activity. So that is also will arise in examination, only diagram. Okay, if even ask for the explanation also, you can write the explanation. So this is about the today topic, ionic
compounds. So this is enough for today. In the next video, we are going to discuss about the occurrence of the metals. Means occurrence means how we are getting the metals from the nature. अब हम देख रहे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सभी हमको आयरन सभी मिल रहे, ये कहाँ से मिल रहे, कैसे मिल रहे सभी. So that is called as occurrence. In the tomorrow video, we are going to discuss about the occurrence of the metals. So stay home, stay focused. Bye bye. Meet in next video.